the main parts of fundamental rights. ठीक है, यहां तक किसी फंडामेंटल राइट्स में कोई समस्या है किसी को? वो पढ़ा ही नहीं तो समस्या क्या है? समस्या तब है जब पढ़ना शुरू करें। हाँ, एटी 89 में समझा नहीं? 29 क्लॉज ए, क्लॉज 1। हाँ, ये 29 में लिखा हुआ है। 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन ना। हाँ 26। हाँ, because it can be controlled by the law. That's why it's not like an absolute property right that you have. It's not like the same right that you had in 31. So it is believed that sometimes religious denominations wants to have such properties that they might use for charity and charitable purpose, because that is crucial to ensure that the practice of religion continues. Okay, so it is basically to upkeep that religious practice. So that's why they have got a right to establish and administer their institutions, and they can do it for charity, not for any profiteering. That's the concern. That's why, because they will do it for charity, so they can hold some movable and immovable assets also. That is allowed. Because then they will have that resource to do such charity. That may be for the development of religious activities or preservation of religious practices as well. So that is more like strengthening that idea. पीछे जो बैठते हैं उनसे विशेष आग्रह है। कोई सवाल है आपका? सबसे पीछे बैठी हुई हैं वो। हाँ, आप बताएं, कोई सवाल है? सब समझ गए? सब? हाँ, तो इसलिए जो नहीं समझे बात करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रंट, पहला बेंच, कोई दिक्कत नहीं। तो कल टेस्ट होगा तो शानदार परफॉर्म करोगे इसमें। हाँ, ओके ओके। आप पूछ रहे ना कुछ? हाँ, आर्टिकल 28 क्लॉज 3, उसमें क्या है? लैंग्वेज से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, डिकोड नहीं कर पा रहे। हाँ, जैसे क्या है बताओ, लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है? तो दो चीज है। पहली बात यह है कि अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, because we have learned that there can be such institution which can impart religious education. तो दो चीज समझना है यहाँ। सिंपली मैंने समझाया भी था, लिखाने में कभी कभी थोड़ा लैंग्वेज हमारा फॉर्मल हो जाता है, बट मैंने इसको समझाया था ऐसे कि दो चीज याद रखना है। पहली चीज, अगर इस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज स्टेट ने किया है, if it has received recognition from the state, then these institution will, even if it gives you the option of religious instruction, that will be only optional, not compulsory. So anyone who is attending that institution, he cannot be said that you have to compulsorily attend the religious instruction. That's the first thing, either religious worship or religious instruction. So it can be held if an institution has to impart religious instructions. You have seen that, so it is allowed. But if the state is providing you any kind of recognition or aid, in that case the state can regulate this part, where the religious instruction will not be compulsory. That's the first thing. Now, what about the people who might be minor? So suppose there is a school. In the school you will have children, they may not be adult. Even if you see the colleges, you have children who are not adult yet, they are still minor. So a student who is still a minor, then
The article says that how will they decide whether to attend or not? So if they don't want to attend, that's fine. But if they want to attend, then they cannot attend only by their consent. They will have to have the consent of their parent or the guardian so that they can participate in either religious instruction or any religious worship. So even if it is allowed by the constitution for some sort of religious instructions to be imparted based on the type of institution, but if the state money is involved, यही मैंने फॉर्मूला कहा था याद रखने को, तो उसमें स्टेट रेगुलेट करेगा और वहां अगर इंस्ट्रक्शन दी भी जाए तो वो कंपलसरी नहीं हो सकती. सो इट्स नॉट ए कंपलसरी इंस्ट्रक्शन. So which means the state has ensured that because it is state's money, because it is state's involvement, and state have no religion, so state cannot say that people who are studying over there, they can actually take part in religious instructions compulsorily. So no compulsory instruction. It's your choice. That's what it says. आपको अगर इंटर्नशिप करवाना है तो मेरिट बेस्ड इंटर्नशिप होना चाहिए. तो मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ मेरिट बेस्ड है या आपको मेरिट इंटर्नशिप करवाना है? कि कोविड के टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर सबमिट करके वो मेरिट बेस्ड मुझे 12 के थे. तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है ना, उसमें अब वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है ना. मेरिट बेस्ड का मतलब होता है एंट्रेंस एग्जाम. हाँ हाँ, किसका एडमिशन डायरेक्ट होता है? मतलब कैसे होता है? उसको कुछ बोलते होंगे ना? नहीं, इट में भी मैनेजमेंट कोटा, उसको ऐसे बोलते हैं, विच मीन्स मैनेजमेंट हैज सम कोटा ऑफ सीट्स ना, वो उनको दिया गया है. दे कांट हैव ऑल द सीट्स विच दे विल गिव थ्रू डोनेशंस, विच मीन्स दैट सीट हैज टू गो थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थ्रू मेरिट, टेस्ट थ्रू मेरिट. जो आप कह रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट कोटा, बिकॉज these are private unaided institutions, so they have management quotas seats, and these seats can be given on the basis of some other means without even entrance test as well, but that's a separate issue. Even in government institutions also we have some quotas. Suppose we have NRI quotas, suppose, तो उसकी सीट की फीस और उसकी सीट में एडमिशन का प्रोसेस एकदम अलग होता है, तो ये कोटा होता है. तो प्राइवेट संस्था के पास मैनेजमेंट कोटा में जो सीट जाती है उसमें आप ले सकते हैं. अदरवाइज यू कांट टेक डोनेशंस. इफ यू आर डूइंग इट, द स्टेट कैन मेक अ लॉ एंड रेगुलेट. क्योंकि जो केस आया उसका बड़ा कारण यही था कि जब आपने देखा राइट टू एजुकेशन वाले पार्ट में मैंने कहा, तो जो पहला केस था वो कौन सा था? 1991 का एक केस का जिक्र किया था मैंने. व्हाट वाज द केस? मोहिनी जैन केस. क्यों हुआ वो केस? बिकॉज शी सेड दैट if people are given admission on the basis of donation, then it is a violation of my right, because it does not give me a right to equality to get myself admitted into those institutions. तो कोर्ट ने माना कि ठीक बात है, क्योंकि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, essential in terms of right to life. That's why you can't make profiteering or you can't take donations. तो donations जो आपको दिखते हैं, those are like donations that comes from a particular set of quota, where they are allowed to have that quota through regulation of the state. That's why they are taking and selling those seats in the form of quotas, where they can have a separate fee structure, which could also lead to such words that you use, donation or any kind of, you can say, developmental money, or जो भी कहते हैं वो businessman के अपने words होते हैं. So that is allowed, but not in general seats. Seats which has to be filled by competitive exam, merit based, where there has to be a rank. मेरिट में जो आया जिसका नाम, उसी को एडमिशन मिलेगा. यू कांट अलाउ एडमिशन विदाउट मेरिट, तो स्टेट कैन रेगुलेट दैट. उसमें स्टेट, हाँ, बट वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ना. तो बट क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर. स्टेट ने रिकॉग्निशन दिया है, स्टेट एड देता है, दैट्स इट. बिकॉज स्टेट हैज रिकॉग्नाइज्ड इट
and state gives aid. That's why it is a state government affiliated college. It is a state government college. That's the reason. And state gives aid also, na? Like bulk of the money is given by the state for these institutions. तो ऐसे minority institutions हमारे देश में और भी हैं जहां state fully fund करता है. Forget about aid. It is fully funded state institutions. जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया. It's a university, but again minority, fully funded by the state. तो इन सब पे भी सरकार का रवैया बहुत क्लियर है that they are basically challenging these identities, that can there be a fully funded like state sponsored minority educational institutions, है ना? This can be a issue, legal issue, but हमारे यहाँ काफी institutions हैं. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप देखेंगे तो we have some minority colleges. We have a college like a St. Stephen's College, again a minority institution. Okay, we have Khalsa. So there are actually like 2 or 3 Khalsa colleges which are established under this minority concept of the minority having the power to establish and administer those institutions. So these colleges can reserve 50% of seats for minorities, because that's what we have read in the law as well. Supreme Court ने TMA पाई में इसको clear कर दिया था कि minority have a right to establish and administer. Administer would also mean admission of the candidates, but admission by merit test and not more than 50% for that particular community. What else? तो मैं ये मानकर चलूं कि सबको सब कुछ समझ में आ गया है, या फिर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ पाया? हाँ, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? मध्यम मार्ग, हाँ? मतलब सत्य कहीं बीच में है, अटक गया है. चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बिकॉज आई डोंट सी पीपल विद क्वेश्चंस. मे बी थोड़ा और समय चाहिए आपको पढ़ने के लिए, है ना? सो let us look at other articles in the Indian Constitution. Other articles means that I have to look at 32 तक किया था हमने कल, यानी मेजर आर्टिकल्स हो गए. अब जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें जानना चाहिए ये आर्टिकल, बिकॉज इफ वी गेट अ क्वेश्चन सो वी आर नॉट कंफ्यूज्ड कि इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे हम. आर्टिकल 33. Now, what does Article 33 says? Article 33 is talking about some laws which Parliament has the power to make, which means only Parliament has the power to make, which can restrict the application of certain fundamental rights under certain conditions. अब याद करो, मैंने एक बार आपको कहा था कि we have a right to freedom of union, association. ये शब्द मैंने यूज किया था एक बार, बट उसमें मैंने फिर ये कहा था कि वी कैन रिस्ट्रिक्ट दिस टू सर्टेन क्लास ऑफ प्रोफेशन और सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. पुलिस में ये पावर नहीं, आर्मी में ये पावर आपके पास नहीं होगा, दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनियन. अब सोचो, आर्मी में अगर यूनियन हो जाए और यूनियन में कोई लीडर हो जाए, एक बार ध्यान से सोचो, और कल को हमारा जंग हो जाए किसी देश के साथ, है ना? यूनियन कहेगा पहले हमारी मांगे पूरी करो, फिर हम जाएंगे जंग में. तो व्हाट विल हैपन टू दीज फोर्सेस? तो जो यूनिफॉर्म बेस्ड आपको फोर्स दिखता है, पारामिलिट्री, इंटेलिजेंस, है ना, मे बी बॉडी लाइक अ रॉ, है ना. आजकल तो रॉ वैसे भी बहुत पॉपुलर है, स्पेशली आफ्टर धुरंधर. सो इफ यू सी दीज काइंड ऑफ फोर्सेस विच आर मिलिट्री फोर्सेस, सॉरी यूनिफॉर्म बेस्ड फोर्सेस, तो उनको सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, even though they might be citizens of the country, because their work requirement is such that the government can restrict the application of certain fundamental rights. So a bureaucrat might have the right to form an association. So IAS have an association, है ना, देखते हैं ना, IAS association. But have you seen an army association? Have you seen a police association? Police association होगा तो वो कहेंगे नहीं, रात का ड्यूटी नहीं करेंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो जाता है, रात में सोएंगे, आई नीड सम ब्यूटी स्लीप्स. तो फिर क्या करेंगे आप? तो जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, जो यूनिफॉर्म बेस्ड फोर्सेस हैं, उन पर ये रूल अप्लाई होता है दैट दे कैन नॉट फॉर्म एसोसिएशन, दे कैन नॉट हैव अ यूनियन. सो बिकॉज दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड.
And so these fundamental rights, if they are given to them, then maybe these forces will lose that. I'm not saying that that will create indiscipline, but then you might not be able to make these forces operate through those kind of disciplined manners that you want them to operate with. You want a complete obedience of decisions, orders in the uniformed forces. और अगर यूनिफॉर्म फोर्सेस में यूनियन हो गया तो फिर क्या होगा? यूनियन कैन रेसिस्ट ऑर्डर्स, बिकॉज यूनियन जब होता है तो दे कैन मेक डिमांड्स, दे कैन रेसिस्ट, दे कैन एंगेज इनटू धरना, डिमॉन्स्ट्रेशंस, हड़ताल. तो ये इंडस्ट्री के लिए ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशन के लिए ठीक है. टीचर्स माइट हैव एसोसिएशन, even IAS might have association, doctors might have an association. But if you give the same courtesy to certain disciplined, professional, uniform services, then it can always have a problem with the issue of discipline in these kind of forces. So 33 is basically explaining to us that logic. It is saying that where do I get this power from? So fundamental rights में ये लिखा हुआ है that parliament will have the power to make a law, which means ये restrictions बिना law के भी नहीं कर सकते, है ना. इसलिए हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है आर्मी लॉ, एयरफोर्स लॉ, यानी आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट. And in that act, what is mentioned? One of the provision which is mentioned is that Article 19(1)(c) might not be applicable to these particular forces, so that they will not have the power to form assembly or union. That's basically the point. So restrictions on fundamental rights with regards to members of armed forces, members of intelligence forces, members who are like paramilitary forces, who do security related work, or you could also say members like the पुलिस फोर्स. ये सब जो यूनिफॉर्म और सिक्योरिटी बेस्ड सर्विसेज देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर सम फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड. बट एक ही शर्त है दैट देयर हैज टू बी अ लॉ which has to be passed by the parliament to restrict the application of certain fundamental rights on these forces. तो इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया? They passed the Army Act, Navy Act. ठीक. So Article 33 is what? That Parliament by a law. तो ये लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बना सकता है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता. Okay, so Parliament by a law can restrict the application of certain fundamental rights. So Parliament by a law, they can restrict the application of certain fundamental rights where to certain class of citizens. तो पार्लियामेंट अगर रिस्ट्रिक्ट करेगा तो फंडामेंटल राइट्स कुछ खास क्लास ऑफ सिटीजन्स उसको, या कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. ये ज्यादा ठीक रहेगा ऑन सर्टेन कंडीशंस, बिकॉज क्लास ऑफ सिटीजन्स में थोड़ी सी दिक्कत हमें हो सकती है, बिकॉज वी आर बिकमिंग मोर क्लास. We are bringing the word class, which is not a very positive word. When we say something in class, it's always a problematic word. So certain conditions, that is, in certain conditions, the parliament, if they have made a law and if they have said that इस condition में fundamental right restrict होंगे, तो those fundamental rights can be restricted for certain citizens on certain conditions. तो क्या क्या है? Parliament would say that there is a restrictions on the fundamental rights of the armed forces, intelligence forces, national security related forces. And what does it mean? It means that the parliament has to make a law. What is that law? That law might be an army act or a navy act. तो किसको किसको होगा? To certain citizens on certain conditions. जैसे who are they? Armed forces, है ना, the navy, air force, or we could say intelligent forces, all of them.
फोर्सेस दैट आर रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, या शॉर्ट में बोलूं तो फोर्सेस दैट आर रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? सो द पार्लियामेंट हैज पास्ड द आर्मी एक्ट, द नेवी एक्ट, है ना, द एयर फोर्स एक्ट, etc. And what they have done? Restricted the application of कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 clause 1 सब clause C. What does it say? Right to form union, है ना। सो अगर इस तरह के ऑपरेशंस में अगर हम लोग हैं तो एनी ऑफ दीज इंटेलिजेंस फोर्सेस, है ना। और इसमें यह भी ध्यान रखना है, हो सकता है इंटेलिजेंस फोर्स में आपके पास काम क्या हो, कारपेंटर का, हो सकता है आपके पास काम हो कोई और, बट अगर आप उस फोर्स में हैं तो आपके ऊपर भी ये लागू है। आप भी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा डायरेक्ट कोई काम नहीं है, माय वर्क इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स। नो, इफ यू आर इंक्लूडेड इन दीज इवन नॉन कॉम्बेटेंट वर्क, आप हो सकता है कॉम्बैट के लिए रिक्रूट ना हो, आप नॉन कॉम्बैट वाले काम करते हो, जैसे आप खाना पकाते हो ना, आप सेवा करते हो। सो इवन इफ इट इज लाइक नॉन कॉम्बेटेंट वर्क, but if you are part of that institution, then these fundamental right will be or will remain restricted. So all of these forces, you will not be having, the application of certain fundamental rights, which would be, suppose, freedom to form unions, or you could say, ये तो यूनियन का है ना, freedom to form union, पर केवल इतना ही नहीं, और भी, और क्या हो सकता है? कभी आपने सुना है कि इन्होंने कहा हो कि नहीं, वी शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो और उसमें एकदम अपने डीजीपी को पूरा एकदम कह रहे हो कि भाई बहुत जाती करते हैं हमारे साथ, बहुत तरह का उस तरह की चीज कभी नहीं सुना होगा। किसी आर्मी में, किसी नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, इंटेलिजेंस फोर्सेस में, यू डू नॉट हैव द सेम अमाउंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो कुछ भी बता दोगे, so you can't write everything. Your freedom of speech and expression remains restricted because you are doing something which is the work of the, security of the nation is concerned. So that's why these act which is there, it restricted the application of 19(1)(c), freedom to form union, 19(1)(a), which is called freedom of speech and expression. ये भी restricted होता है इनका, they do not get it, although they are citizens, but they will not have the same amount of freedom of speech and expression that I may have. It is remains restricted. Plus, they can also, which means they can also, they are restricted from association with political parties. किसी राजनीतिक दल के साथ वो एसोसिएट नहीं हो सकते, they can't have that kind of freedom. That is the law which exists over there, which can be passed by the parliament. ठीक है। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि this is supposedly we can say a power which the constitution has given to the parliament. तो अब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो you can't say that this law contravenes my fundamental right. यानी वो व्यक्ति जिसको कॉन्ट्रवीन किया गया है, जो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट में है स्टेट के, अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर उसके किसी फंडामेंटल राइट के एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट करता हो, तो दैट पर्सन डू नॉट हैव द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, व्हिच मींस एनी लॉ व्हिच इज पास्ड अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. Any law passed under Article 33 cannot be challenged in the court of law. ठीक है, कोर्ट में दिस विल नॉट बी
worthy of any kind of challenge. So courts will not entertain such petition if there is a law which is already there and that law is basically restricting, limiting the application of certain fundamental rights, specifically freedom of speech and expression, freedom to form association, right to participate with any political parties or associate yourself with any political party. So अब पता चला कि आर्मी में बड़े पोस्ट पर पोजीशन पर हैं और आप चुनाव हो रहा है और लोगों से वोट मांग रहे हैं, है ना, स्टार प्रचारक हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर अ डिसिप्लिन फोर्स. You should actually be completely deviated from politics or any political parties. That's why these kind of powers do flow from Article 33. But ये power किसके पास है? Only the Union Parliament. State legislator will have no such power. ये ध्यान रखना है, इसलिए पार्लियामेंट शब्द इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है. प्लस पार्लियामेंट जब एक्सरसाइज करेगा द पावर अंडर आर्टिकल 33, then whatever law the parliament might make, frame, that will not be challenged in any court of law. यानी उसके लिए कोई court of law में हम उसको challenge नहीं कर सकते. This is what the constitution gives us in terms of information under article 33 of the Indian constitution. ठीक है? Next is again a very simple article, that is article 34. Article 34 also talks about restrictions on certain fundamental rights, which means restriction on fundamental rights during the operation of martial law. Martial law is not defined in the constitution, but constitution has used such an expression, okay, that martial law can be imposed in the country, and when there will be martial law, so it's like an exceptional article. It says that fundamental rights can be restricted, but during the operation of martial law in any part of the country or in the entire country. तो मार्शल लॉ का भी लगा है हमारे देश में. Have you seen the application of martial law in the country? No, because martial law would mean that it's basically the takeover of the entire administration by the army, है ना. यानी कि उस वक्त आपकी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, पब्लिक अथॉरिटीज हैं, they will not be the one that will be carrying on with the administration of the state. So you can have curfew or such situations where there are so many people's movements might be banned or things like that, but it does not mean that it's a martial law. You can have a practice like an Armed Forces Special Power Act, which means armed forces will act in those territories which are disturbed territories with some special powers and authorities. But even that is not a martial law. Martial law is an expression that would mean that whenever there is a martial law in the country, the entire administration will be taken over by the army. In उस वक्त there will be non-existence of the civilian government. That is understood as martial law. But what the constitution has done, they have written about the martial law scenario in article 34. So what can happen in martial law? So martial law, if it is declared in the country, then there might be some restrictions on the fundamental rights or applications of fundamental rights during martial law. तो जब मार्शल लॉ चल रहा हो तो उस दरमियान हो सकता है कि फंडामेंटल राइट आपके रिस्ट्रिक्ट हो. कैसे रिस्ट्रिक्ट हो? जैसे कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने या किसी व्यक्ति ने मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई काम किया हो, दैट माइट हैव वायलेटेड योर फंडामेंटल राइट, बट इट कैन बी इंडेमनिफाइड, यानी उसकी माफी हो सकती है, उसमें उसके लिए उनको कोई सजा नहीं मिल सकती, है ना. तो पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकता है और उस एक्शन को कंप्लीटली इंडेमनिफाई कर सकता है, यानी वाइप आउट कर सकता है. उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं, कोई कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा. इफ द पार्लियामेंट इंडेमनिफाई एक्ट of a person who may be an official or any person who have done anything for maintaining law and order in that area. So the idea is that when there will be disturbance in the area, then we will have to restrict certain actions related to fundamental right, because to maintain law and order, the state, the constitution is basically saying that either the public authority or any person, if they have done something which is in light of performance of actions leading to ensuring that they are able to maintain law and order, then in that situation,
even if like my action may have violated your fundamental right, but the parliament can write it off. It can indemnify my actions for maintenance of law and order when martial law was in force. ये ध्यान रखना है. तो ये कब लागू होगा? when martial law is in force. So important concept यहां पे क्या है? restriction on fundamental rights during the operation of martial law. So that's the restriction on the fundamental rights during the operation of the martial law. Okay? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मार्शल लॉ के दरमियान भी हम हैबियस कॉर्पस की रिट सुनेंगे. यानी अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया गया है and we have a petition for habeas corpus, then we will retain the power to issue the writ of habeas corpus. तो यानी आपके लाइफ को, आपके बॉडी को, आपके लिबर्टी को उस वक्त भी कोर्ट सुरक्षित करने की कोशिश करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि पार्लियामेंट विल हैव स्पेशल पावर टू इंडेमनिफाई एनी एक्शन विच माइट हैव वायलेटेड एनीवन्स फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द conduct or during the maintenance of law and order when martial law may be in force. ठीक है, दो बातें यहां पर कही गई है. तो हमें जानना क्या है? पार्लियामेंट को इंडेमनिफिकेशन की पावर दी गई है कि अगर किसी के एक्शन हैं एंड दैट एक्शन में अमाउंट टू वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अदर पर्सन, देन इट कैन बी इंडेमनिफाइड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ. प्लस कोर्ट ने यह कहा दैट व्हेन इट कम्स टू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, वी विल बी retaining the right to issue a writ of habeas corpus even when martial law might be operational in any area or in the country. ठीक है? It is a restriction on fundamental rights of citizens, when martial law is in force in any area. Next point, it empowers the parliament to indemnify any government servant or any person for any act done for maintenance of order when martial law was in force. Next point, the Supreme Court has said that even under martial law, the court can issue the writ of habeas corpus for the protection of individual life and liberty.
35 इज द इजीएस्ट वन। 35 ये कहता है कि आपने फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस तो पढ़ लिए, बट जिन जिन प्रोविजंस को इफेक्ट देना हो, यानी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको इफेक्ट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन से नहीं मिलता, in order to make them effective you have to pass a law. So it talks about कि parliament can only legislate on fundamental rights or on certain fundamental rights to give effect to the provisions of part 3 of the Indian Constitution. So who can legislate? Parliament alone can legislate on certain fundamental rights to give effect to the provisions of part 3. So there are many such provisions which I would have told you which are not self-executory. So to execute those fundamental rights, or rather to make these fundamental rights effective, what you need to do? You need to pass a law. Who can pass that law? Only the parliament. That is what is mentioned in Article 35. Now, what are the basic provisions which points us कि only parliament can make a law to make certain provisions of part 3 effective? तो जैसे 16 clause 3 primary example. तो आर्टिकल 35 क्या कहता है? Parliament alone can legislate on certain matters to give effect to certain provisions of part 3 of the Indian Constitution. That is, it says Parliament alone can legislate to give effect to certain provisions of part 3. So Parliament alone can legislate to make these part 3 provisions effective. इसका मतलब क्या हुआ? State legislature will have no such power. जहां जहां ये शब्द लिखा हुआ है specifically Parliament alone can legislate, it would mean that we are clearly trying to say that despite state legislature also being a legislature, but they might not have the power to legislate over these issues. No, so only Parliament will have the right to legislate. जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 33 है ना, 33 पढ़ा, 34 पढ़ा, इंडेमनीफाई करने के लिए भी लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। कौन बना? केवल पार्लियामेंट बना सकता है, पार्लियामेंट ही इंडेमनीफाई कर सकता है। 33, 34 पढ़ा। आर्टिकल 17 मैंने बताया था, अनटचेबिलिटी, सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, एग्जीक्यूट करना है तो कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट। आर्टिकल 23 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। 16 क्लॉज 3 बताओ क्या था? 16 क्लॉज 3 हाँ, residence as a clause. Very good. That is, residence as a criteria for certain public employment. Who will make that law? और मैंने एग्जांपल भी दिया था, किसने बनाया था वो कानून? पार्लियामेंट ने बनाया था। Which means कि वैसे तो 16 क्लॉज में बहुत स्पष्ट है कि रेसिडेंस कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर डिस्क्रिमिनेशन, बट एक्सेप्शन है 16 क्लॉज 3 कि रेसिडेंस कैन बी अ क्राइटेरिया इफ पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ हैज मेड सच अ क्राइटेरिया फॉर certain employment for certain posts or positions. 16 clause 3. 32 clause 3 क्या था? कल पढ़ा है। यस, मैंने कहा कि ये बहुत ही अनयूजुअल टाइप का पावर लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है, बट यू शुड नो दिस। 32 clause 3 says के जो राइट टू इशू रिट है, all the writs or any of the writs, this power can be given to any subordinate courts acting within their local limits of jurisdiction on any of the writs or all of the writs. But who will give this power? Parliament by a law without any prejudice to the powers of the Supreme Court of India. तो इसलिए हमारे पास कौन कौन से हो गए कि Parliament alone can legislate to give effect to certain provisions of Part 3. So it will be 16 clause 3. पहला तो यही प्रोविजन है, इससे पहले तो कोई प्रोविजन नहीं दिखता हमें। फिर दूसरा आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में ऐसा कुछ है? 19, 20, 21 नहीं है। 21 में हमने क्या देखा? 21A था, राइट टू एजुकेशन, तो उसके लिए वी हैव राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगेन
पार्लियामेंट हैज गिवन इट, चलो वो अमेंडेड है, छोड़ देते हैं उसको. व्हाट एल्स? 16 के बाद कौन से आर्टिकल मेजर हैं? 17 के बाद एक्सप्लॉयटेशन 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और फिर क्या आया? 32 क्लॉज 3, फिर 33, 34, ये सब आर्टिकल. इन प्रोविजंस को अगर इफेक्टिव बनाना है तो इस पर लॉ कौन बना सकता है? केवल पार्लियामेंट. ओनली पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज, टू मेक दीज प्रोविजंस इफेक्टिव, or to actualize these provisions, to give effect to the matters which are written under these provisions. Who will make a law? Parliament will make law. This is the larger study of fundamental rights section. ठीक, ये समझ लिया हमने के? अब तो किसी को दिक्कत नहीं है किसी में? अब तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? क्रिटिसिज्म. क्या आलोचना कर सकते हैं फंडामेंटल राइट? हाँ, यानी ऐसा लगता है कि संविधान ने हमें एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया, है ना? तो ये एक बात हो सकती है कि फंडामेंटल राइट्स हैव टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस. ये क्रिटिसिज्म है जो कि वैलिड है, वैलिड पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स हैव टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस. अच्छा, हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो रीजनेबल शब्द नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अभी शो करना है कि there are immense restrictions over fundamental rights. Too many restrictions. We have a list of restrictions, reasonable restrictions that we see in the fundamental rights. Plus, what else? What else? कोई ऐसा fundamental right का जिक्र मैंने किया था जो बड़ा disturbing है, because instead of giving right to the people, it gives right to the state more than to the people. What was that? Article 22. What was that? Preventive detention. या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आपने लॉ देखा होगा तो दैट इज गिविंग द स्टेट इमेंस पावर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इट शुड बी अ पावर दैट शुड बी, इट शुड हैव बीन मोर लाइक अ राइट टू द इंडिविजुअल. So we are talking about preventive detention as a fundamental right, but here the power has shifted to state, which means in preventive detention, why it is criticized? Because it gives power to state to restrict individual liberty, और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है स्टेट को. That is why this is one of the major criticism of fundamental rights, where you could say that you have given huge powers to the state, arbitrary powers to the state. So state, if it wants to constrain your liberty, it can constrain it. The state will not have any concern or issues if it wants to constrain your liberty, because here the state remains very powerful to restrict your, constrain your individual liberty. So this is like one of the most prominent criticism in fundamental rights list. मैंने कहा था एक जगह जहां मुझे लगता है कि थोड़ा फंडामेंटल राइट में अगर गुंजाइश थी कि हम यहां पर एक बेहतर फंडामेंटल राइट लिख सकते थे, तो नहीं, हमें यहां पर दिखता है कि स्टेट की तरफ झुकाव ज्यादा है इवन इन दिस फंडामेंटल राइट. बट गिवन द फैक्ट दैट व्हाई स्टेट की तरफ झुकाव ज्यादा है, बिकॉज दैट इज अ बायस दैट वी कैन सी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हेनेवर इट कम्स टू द इशू ऑफ सिक्योरिटी, द इशू ऑफ public order, the constitution is always moving more towards the state. The state is made powerful so that the state can overcome any such scenarios where there can be a threat or a threat perception to public order or security or stability of the state. That is why this is falling in the same category. So if government would not have such extraordinary powers of preventive detention, then the government might not take so many steps. That is crucial as per the government's understanding. For example, this Article 35A, and its application was taken away from Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. But how could we manage peace in the valley without any
create violence or any threat to public property and life. How could we do that? Because we have used the powers under preventive detention to detain all the political functionaries of the state, and we detained them for a good amount of time. So these are like mechanisms which the state would need for better law and order and stability and ensuring peace in the scenarios of different work that the state performs. And that's where I think the constitution is tilted again more in the favor of the state. Otherwise, fundamental right mein jo tilt hai, it is towards individual, not the state. That's why we said that fundamental rights looks very negative in nature, because the state undergoes with so many restrictions under fundamental rights, but not in this particular article. Here the state is enabled to actually legislate on issues, on conditions where they can actually take you for detention for a larger period of time, which may exceed even 3-month period. ठीक? फिर और क्या क्रिटिसिज्म है? So which means remedy is expensive. ये हमारी लीगल जुडिशियल सिस्टम का भी एक क्रिटिसिज्म है. तो फंडामेंटल राइट में भी वो हमें क्या पावर देता है कि रेमेडी इज अवेलेबल वेयर यू कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर फंडामेंटल राइट 32. Now, how many people do have the potential or capacity to come to the Supreme Court and address or get their problems addressed in the court of law? Is it easy? Why? Because Supreme Court is a very expensive place. The remedy is very expensive. And most of the Indians, like common Indians, they would not have the capacity or the resource to seek that expensive remedy in the Supreme Court of India. So even though you have a remedy, but because of the expensive process of remedy, the expensive nature of remedy, you might not be using that remedy. So one of the important criticism we can still point out is the expensive remedy for fundamental rights. So we have remedy which is available, but the remedy is very, very expensive. Okay, what else? What else? Fundamental rights are? So why do you want anything to be absolute in nature? It's good or bad? No, but if a right is absolute in nature, it is good or bad? So any circumstances. So is it good or bad? Why do you think it is good if you have absolute right? हाँ, तो वो क्रिटिसिज्म था, बट उसको ठीक कर लिया ना. 20-21 तो नहीं हो सकते. हाँ, वो क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते कि राइट्स एब्सोल्यूट हो. एब्सोल्यूट क्यों राइट? Why should have absolute right? For example, you have a freedom of speech and expression. Why should that be absolute? That's a problem. Because absolute होने का मतलब it will be more problematic. Absolute होने का मतलब है फिर मैं कुछ भी बोलूं किसी के बारे में तो मैं पढ़ा पाऊंगा. तुम लोग absolute right practice करने लग जाओगे तो, है ना, सब एक एक करके खड़ा होगा और शुरू कर देगा. And you'll say freedom of speech and expression. तो फिर when will I express? जैसे ही तुम एब्सोल्यूट बोलते हो तो इट इज इटसेल्फ अ क्रिटिसिज्म. नथिंग शुड बी एब्सोल्यूट. एवरीथिंग हैज टू बी लिमिटेड रीजनेबली. ये तो शुरू में ही पढ़ा ना हमने, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो बहुत मुश्किल से हम इस दौर पे आए जहां हमने अथॉरिटीज को लिमिट किया, क्योंकि अथॉरिटीज भी अगर अनलिमिटेड है तो हु इज इन डेंजर? वी आर इन डेंजर. अगर हमारी पार्लियामेंट भी एब्सोल्यूट हो गई, हमारी एग्जीक्यूटिव के पास भी एब्सोल्यूट राइट्स हो गए, एब्सोल्यूट पावर्स हो गए, तो कौन इंडेंजर्ड होगा? हम होंगे ना. इसलिए जरूरी है कि सब कोई अपने अपने लिमिटेशंस में रहे. नेवर ट्राई टू पास द लिमिट्स दैट इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इफ वी आर एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देन वी शुड ऑल्सो फंक्शन विद इन आवर लिमिटेशंस इमर्जिंग फ्रॉम राइट्स. है ना? हाँ, या वेरी गुड. यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बड़ी सी लिस्ट है, और उसमें डिफेमेशन को क्या बताया गया कि डिफेमेशन कैन बी क्रिमिनल डिफेमेशन.
और उसको लेकर के मैंने आपको सुब्रमण्यम स्वामी केस बताया था, where Swamiji has said in the court of the law that, see, most of the liberal countries of the world, they have just eliminated the idea of criminal defamation, but India continues to keep criminal defamation. That is in the nature of a criticism of fundamental right, which means defamation is defamation. It should be a civil offense. It should not be a criminal offense, as we see the defamation cases in the developed world. Okay? So that's another criticism, that under Article 19 Clause 2, defamation is treated as criminal defamation. So criminal defamation is another basic problem. और इसको क्या माना जाता है? इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो ये बोलते हैं बहुत सारे लोग, इट इज अनरीजनेबल. यू कांट से इट इज रीजनेबल. सिविल डिफेमेशन इज रीजनेबल, बट क्रिमिनल डिफेमेशन इज नॉट रीजनेबल. इट्स अनरीजनेबल बिकॉज आई वांट टू से समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, बट आई नो दैट माय एक्सप्रेशन में लीड मी इनटू जेल. इट मे बी दैट ट्रबलसम. देन व्हाट आई विल डू? आई विल एक्चुअली रिफ्रेन फ्रॉम माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो कोई ऐसी राइट है जो मुझे संविधान देता है, हो सकता है मैं इसका इस्तेमाल ही ना कर पाऊं कभी. तो इसीलिए इसकी क्रिटिसिज्म में यह कहा जाता है दैट इट इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बट 19 क्लॉज 2 तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही है ना, और इसको माना गया कि दिस इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 वेयर डिफेमेशन इज ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. केस भी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ठीक है, ये होना चाहिए, भारत जैसे देश में इसकी जरूरत है. प्लस जो अभी बता रहे थे वो कि फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड या कर्टेल कर सकते हैं, ऐसा भी अधिकार संविधान देता है. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट कैन बी कर्टेल्ड यानी शॉर्टेंड और रिस्ट्रिक्टेड, है ना. तो व्हेन कर्टेल्ड एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड, आई शुड से, ये तो छोटा शब्द हुआ, सस्पेंडेड वुड बी द करेक्ट वर्ड. सस्पेंडेड कब? अंडर इमरजेंसी. तो ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इफ समथिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, देन व्हाई आर यू सस्पेंडिंग इट? व्हाई डू यू अलाउ द स्टेट टू सस्पेंड द एप्लीकेशन ऑफ दोज राइट्स? दैट मीन्स दैट यू आर नॉट टेकिंग दैट राइट सो सीरियसली. Because if the right is so prominent for the welfare of individual, for the attainment of potential of the individual, for ensuring that India functions like a democracy or India emerges as a democratic state, then those rights should have been untouchable. They should have been sacrosanct. They should not have been touched upon by the state. But during emergency, you have written that all these rights can actually be non-enforceable, which means they can be suspended, become non-enforceable. Now, at least what you have added is except Article 20 and 21. So this is basically a saving grace, but other than that, we see the violation, curtailment and suspension of fundamental right during emergency. These are the points which are evoked in order to criticize or being critical of fundamental rights. There is no in Article 31 Clause B. So what is IR Coelho versus State of Tamil Nadu case? ऐसे से मत करो, क्या है बताओ. What is IR Coelho versus State of Tamil Nadu? सुना है ये केस? किस जंतु का नाम है? हाँ, क्या है? नहीं याद है तो पढ़ो उसको, इसलिए मैं कहता हूँ रिवाइज करो. आयर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तुम्हारी बात का जवाब दिया कि तुम्हारे जैसे किसी स्टूडेंट ने ये बात पूछ दिया कि व्हाट अबाउट दी 31B? हाउ कैन यू से दैट समथिंग व्हिच इज रिटन or which is inserted in the 9th schedule, it cannot be judicially reviewed? Because in 1973 Keshwanand Bharati case, the Supreme Court has already said that judicial review is a basic structure of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया. उन्होंने कहा yes, from 1973 24th of April, whichever law is inserted in 9th schedule, they will be open for judicial review. But if there is a law which is inserted in the 9th schedule before 24th of April 1973, then
judicial review will not be applicable, because if there is no doctrine of judicial review, if there is no idea of judicial review, then why would we apply that to the pre-judicial review era, also the pre-basic structure era? So if basic structure doctrine is created on 24th of April, then for the violation of basic structure, we can review any law, even if it exists in 9th schedule. But yes, if a law exists in 9th schedule before 24th of April, when there was no basic structure doctrine, then those laws are special laws. We will not review it. क्यों? क्योंकि judicial decisions have a prospective effect. They do not have a retrospective effect. कितनी बार बोला था ये बात? और भी ऐसा कुछ लगता है मन में क्रिटिसिज्म के लिए? नहीं. तो दिस इज लार्जली दी क्रिटिसिज्म. हाँ, are known, not all of them, some of them. Yeah, some of them. So we have discussed about that. Parliament can make a law. So that's not a problem. You can say that you want to write something in the nature of a law, but sometimes there are some concerns which cannot be written in the law format, and for that a law has to be passed, so that those concerns has to be met on the ground. So you could say that some are like not self-executory, but fundamental right is a rights list. It's not a legal document in the sense that it is a list where everything will become applicable because it is written in a language which is a very legalistic language. We say that Parliament will have the power to make laws to give effect to certain fundamental rights. तो rights ज़्यादा important है. हमने rights में वो right आपको दे दिया, अधिकार दे दिया, और अब Parliament कानून बना के आपको वो अधिकार दे सकता है. हाँ, ला सकते हैं मतलब फर्स्ट स्टेज में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, कोर्ट अपना जजमेंट अगर देगी तो आ सकता है, बट फॉर दैट दे हैव टू सिट इन अ बेंच विच इज मोर देन दी इंदिरा साहने केस, बिकॉज इंदिरा साहने ने साफ साफ कहा है कि क्रीमी लेयर विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दी फर्स्ट स्टेज फॉर SC and ST. It is only available for OBC. हाँ, certain means certain laws. For whom? फिर क्लियर कर दिया ना, for people who are in these kind of services. Don't need to be confused. You just have to remember one thing, that for all the uniform services, Parliament will have the power to make laws restricting the application of certain fundamental rights. Certain means it could be any fundamental right. At the moment, we can see that not allowing you to participate with any political parties or get yourself associated with political parties, no association, freedom of association, no freedom of speech and expression. So it will be reviewed. If you say arbitrarily, so which means it is reviewed. Parliament has to have a reasonable justification for any law that they make, na? Because 33 is specially for ensuring the security, and discipline in the uniform services. Every country has that. Yeah. Yeah. Yeah, so this is more like legal interpretation of it. People criticize it for that as well, because these are very subjective assessment by the state. So what can cause a harm to public order, what can be actually seen as a problem to the security of the state, and there the state becomes extremely powerful in terms of lawmaking, where they can use these words to actually restrict the application of certain fundamental rights. It's actually true. Plus, it is also true that fundamental right does not deal with socio-economic rights. It's largely a document that deals with civil political rights. So that is also a valid criticism. That is, does not deal with socio-economic rights.
वैलिड क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इसीलिए हमने पार्ट 4 बनाया है ताकि हमें ये सब यहां लिखने की जरूरत ना हो। ठीक है, डिले इन जस्टिस, इसमें तो जस्टिस का एकदम त्वरित जस्टिस है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्यों डिले होगा? कोई डिले नहीं है। अब जजमेंट थोड़ी कि आज के आज हो जाएगा। You go to the Supreme Court, which means it's the best remedy you could have as far as the law system is concerned. Because see, justice will not be available to you based on how quick you want. It will depend on the court also, na? The court, and you are here with the Supreme Court of India. So you're not going through a detailed process of lower court, so many cases pending, so your turn will come late. So the Supreme Court is basically giving you a priority to listen to your case because it's a case that is concerned with Article 32, or Part 3 violation. So you get very quick remedy. That's what is the importance of fundamental rights, not the problem. ठीक है, अब लिखिए, फाइनली कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। Ultimately, we can say that fundamental rights in the Indian Constitution serves as a cornerstone of democratic and egalitarian society, embodying the principles of justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है, so this is moreover the understanding of fundamental rights. Okay, now we'll start with DPSP, that is part 4 of the Constitution. And DPSP would mean directive principles. So this is not right, this is actually principles of state policy. And here you have Article 36 to 51. Okay, so let's look into the issue of DPSP, that is Directive Principles of State Policy. So we have already seen in the preamble part where the constitution makers really understood two very primary issues. If they wanted to construct India into a successful democracy, then they knew that only political democracy is not going to be a successful experiment in India, because political democracy was just a topsoil, while beneath the topsoil, the society, especially the social democracy, was highly problematic. तो अंबेडकर साहब ने इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तो क्रिएट करता है, लेकिन सामाजिक रूप से हम अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं थे। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? वो एक तरह का जो टॉप सॉइल है उसके ऊपर हमने एक बीजारोपण कर दिया है, ठीक है, बीज को डाल दिया है टॉप सॉइल पे, लेकिन उस टॉप सॉइल के नीचे की जो जमीन है, जो नीचे का सॉइल है, वो अभी भी अनडेमोक्रेटिक है। सो वी हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर इंश्योरिंग social and economic democracy. So look at the society. Society is highly uneven. We are divided into so many hierarchies in society.
Suppose the society is divided into caste-based hierarchy. Society is divided into class-based hierarchy. So there are high caste and low caste. There are high class and low class. So which means that socially, as one unit, if I say, we are very, very divided. Now let us come to the same logic in the economic sphere. Economic sphere also, if you witness, then India is a highly unequal society in terms of economy, in terms of people who possess resources. So resource distribution is very, very skewed in favor of a tiny minority of the country. Yeah. So you could say that there are 5% of the population who might have control over roughly 90% of the country's resources, or 70% of the country's resources. Now, if that is what we are witnessing, then it's a very, very problematic sort of graph that we are presenting, because a society, if it really wants to become a democratic society, it cannot be so uneven and it cannot be so unequal in economic matters as well. That's why, where does democracy exist? I have been always telling you this proposition that the best democracies would exist in those nations which are socially and economically also at a satisfactory level of development. That is, there is a satisfactory level of economic development. You don't see that there exists a huge gulf between the poor and the rich. You know, if you're living in a society like a Western society, you won't have a person who would be like super elite, super rich, and then you would have a person who would be very, very, below poverty line kind of scenario, which exists in our country. We have a substantial population in our country who are like billionaires, super rich category, and then we have an enormous set of people who are actually living in extreme poverty. If you go and see the conditions of democracy, what has sustained India's democracy all these years? You could say one of the important points through which India has sustained its democracy is because India always has produced a middle class that has been the balancing factor, that has kept India a stable democracy. Look at Pakistan. Why could Pakistan not be a stable democracy? There are so many reasons for it, but one of the important reasons that is understood in political ideas and theories is that if you don't have a very huge, or you don't have a enormous middle class, then there can't be stability in the country, because a high class and a low class is a total recipe of disaster. You need a middle class in between, and that middle class should be more than what you have in the high class and the low class. Pakistan don't have it. In Pakistan, you have a high class and then you have a low class. There is a complete absence of the middle class. Middle class is the cushion that brings balance. This is what you read in most of the political theories as well. Most of the political commentators who have talked about the stability part of democracy and politics, they have realized that it is required that you have a thriving middle class to ensure stability. So even the Greek philosophies have talked about it in the ancient era. That's why this is a very important factor. So middle class would mean that if you have a bigger middle class, then it means that you have more or less tried to create an economic, you have tried to create more or less you have tried to rectify more or less the problems of economic inequality of the society. I'm not saying India has a very satisfactory result in that part, but India's problem is actually covered by the rising middle class, which is like enormous in size, and that somehow leads to the stability in India's democratic politics. That's been one of the reasons. So DPSP is inserted in the constitution because A, we have completed one of the tasks, that is to provide civil and political liberties to the people, to ensure political democracy in the country. Now B, we have to focus on socio-economic democracy, and for that we needed to have an idea like a directive principles of state policy. But the question is that why can't it be a right? Why a principle? Why a directive principle? Why not a right? Because you have to realize that when the Constituent Assembly sat, इसके बारे में मैंने जिक्र किया है, they divided the rights into two parts. One, which could be easily applicable, which means
which could be implemented instantly, while those other provisions which would require the state to achieve a certain level of prosperity so that they could have the resource to implement those rights. Suppose if I am a state and I give you a right to work, suppose, तो स्टेट राइट टू वर्क अगर देगा, फंडामेंटल राइट, तो आपके पास काम तो नहीं होगा, तो आप स्टेट कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट को कहेंगे कि भाई इन्फोर्स करो मेरा फंडामेंटल राइट, हमको अधिकार दो काम का। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भत्ता देना पड़ेगा बिना काम के। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ा पॉपुलर हो गया ये आइडिया, वेस्ट यूरोप वगैरह घूमते हैं बहुत सारे नेता, तो उनको वहां देख के लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज अब मैनिफेस्टो में लिखने लगी है कि बेरोजगारों को जो है पर मंथ कुछ भत्ता दिया जाएगा। किसी पार्टी ने कहा 12,000 देंगे, किसी ने कहा 15,000 देंगे, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब 12,000 15,000 मिले तो क्या बुरा है ना। गरीबी में 12,000 तो लग्जरी है, जहां हमारे पास कुछ नहीं है वहां अगर 12,000 आ जाए तो बुरा नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जब ये कहती है तो उनको ये समझना चाहिए कि इज इंडिया इनटू दैट कंडीशन। एक स्टेट जो पहले से गरीब राज्य है ना, जिनके पास अपनी जो रूटीन वर्क है उसके लिए प्रॉपर they can't have that resource, then if that state is saying that no we will be giving you बेरोजगारी भत्ता also, है ना, then it means that these are over the top promises. उसको इंप्लीमेंट जब करने का समय आएगा तो क्या करेंगे आप, आसमान देखने लगेंगे। उसको कहते हैं मुंह बिचकाना, है ना। So you will actually be acting in that manner because it's tough, it's difficult. Nowadays populism politics has multiplied so many times. लेकिन पॉपुलिज्म का फायदा किधर होता है सबसे ज्यादा, इट्स बेसिकली टारगेटिंग दोज वोटर्स हु आर सोशियो इकोनॉमिकली अ बिट बैकवर्ड। और वो स्टेट की जिम्मेदारी है, होना भी चाहिए। स्टेट हैज टू मेक स्पेशल प्रोविजन सो दैट दे कैन इंटरफेयर इनटू these areas where people who are backward socially economically, they have special policies so that these peoples can be given some sort of help by the state. So why did the constitution maker did not write this as a right but as a policy, as a principle? Because they said that these are something which cannot be implemented instantly. It can be implemented but gradually, as and when the state is in a position to implement them. So think about it. Article 21A. Where was this article written in the original constitution? Article 45. वहां लिखा हुआ था ना. But when the time came, the state made it a fundamental right? Yes or no? Yes. So this is what you have to understand. So now the state realized that they have enough resource that they can even grant these principle in the form of a right to the individual. So they said 21A, you will have a right to education. But जब तक resource नहीं था तो हमने क्या कहा? This will remain as a directives to the state. Plus, any state, they will need to make some policies to govern. कोई भी राज्य सबसे पहले क्या करेगा? उसको नीति बनाना होगा ताकि वो गवर्न कर सके। तो अब संविधान सभा को लगा कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें हम लिख दें जो हमेशा आने वाले समय में सरकार को अपनी नीति में शामिल करने के लिए प्रेरित करेगी। Which means it will always motivate the state, inspire the state to bring in these ideas into their lawmaking, into their policy making. That's why they introduced the concept of directive principles of state policy. So yes, it is true that we don't have enough resource at this point of time, so we can't give these principles as a right. So we are writing this as DPSP, Niti Nirdeshak Tattva, so that when the state is making its policies, the state will pay heed to these policies and try to introduce these policies as directions by the constitution to be introduced in the policy making, and that would usher India into a socio-economic democracy as well. So we have attained political democracy, but we are not ignoring social and economic democracy. So part 3, part 4, both are crucial for you. That is why Granville Austin would say that for me, part 3 and part 4 consist of the consents of the Indian Constitution. तो अगर भारत के संविधान का कोई कॉन्सेंस है, व्हाट इज कॉन्सेंस? अंतरात्मा की आवाज. So what is that consensus? It's the part 3 and part 4 of the Indian Constitution. That is, we want to not only ensure political democracy in India, but we also want to ensure socio-economic democracy in India. ठीक है, लिखिए. पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
So objective is to create a welfare state. फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव क्या था? What was the objective of fundamental right? To create a democratic state. That is, state without fundamental rights you can't have democracy. So that's what political democracy के लिए fundamental right crucial था. Welfare state के लिए DPSP crucial है. That is, what kind of welfare state? What kind of democracy? That is social plus economic democracy. Where is the inspiration for this come from? So inspiration is from the Irish Constitution. Inspiration is from the Irish Constitution. That is Constitution of Ireland. Okay. Granville Austin, what did he say? Granville Austin, he actually said that fundamental right plus DPSP constitute the conscience of the Constitution. ठीक है? Conscience, not the nonsense. Conscience. Okay? Conscience of the Indian Constitution. ठीक है, अब एक टेबल बनाते हैं हम लोग. यहां पर शुरू में ही पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या बेसिक डिफरेंस है ना, एक टेबल के तौर पे. तो टेबल में 3 पार्ट बनाए कि कौन से बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो बेसिस, सो ऑन व्हाट बेसिस आर वी मेकिंग दीज डिफरेंसेस. और पहले कॉलम में डीपीएसपी और दूसरे कॉलम में फंडामेंटल राइट. तो हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन इस टेबल में एक जगह पर हमें मिल जाएगा पढ़ने को. जैसे सबसे पहले नेचर. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर लेट अस डिफरेंशिएट द टू. सो व्हाट इज डीपीएसपी's नेचर? चलो, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स नेचर? व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स नेचर? दे आर, हाँ जोर से बोलो. व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स नेचर? दे आर नेगेटिव इन नेचर. डर क्यों लग रहा है? ठीक तो बोल रहे हो, नेगेटिव. पर नेगेटिव इन नेचर क्यों? व्हाई नेगेटिव इन नेचर? जिसने नेगेटिव बोला बताओ, रीजन बताओ. व्हाई नेगेटिव इन नेचर? Because it's a limitations on the state, which means it tells the state that you can't enter into certain domain and territory of individual liberty. That's why it is basically negative in nature. What is DPSP then? Positive. Why positive? Negative क्यों? क्योंकि ये हमें मना करता है कुछ करने को. तो ये हमें कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, इसीलिए नेगेटिव. नेगेटिव नॉट एज इफ इट इज बैड. नेगेटिव एज पर दी words expression, because it restricts the state from doing certain things. That's why negative. जबकि DPSP क्या है? ये नीति निर्देशक. It is directing the state. What it is directing the state for? To do certain things. तो जब आप कुछ करते हैं तो you are doing something. Doing something is what? Positive. है ना? So which means you are adding something. You are doing something. You are doing something. That is why it means that it is positive in nature. So what is the instruction? To achieve certain goals of the constitutions, that is certain goals of the state, certain goals which is prescribed through the principles in the constitution. So it is positive, while fundamental right is limitations on the state. That is why it is negative in nature. तो इसलिए बेसिस सबसे पहले क्या देखेंगे? नेचर. तो डीपीएसपी के लिए लिखिए, इसमें लिखिए it is instruction to the government. It is instruction to the government to achieve certain goals. So it is instruction to the government
to achieve certain goals, so it is positive in nature. So it is positive in nature. फंडामेंटल राइट से कॉलम में लिखिए, इट कॉन्स्टिट्यूट्स the limitations on the powers of the state, full stop. So they are negative in nature. तो ये क्लियर हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट. अगेन नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. व्हाट इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड व्हाट इज नॉट एनफोर्सेबल? डीपीएसपी. तो डीपीएसपी में क्या लिखेंगे? नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. और ये सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट की कि इट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. थर्ड इज विजन. विजन क्या विजन है? विजन मतलब समझते हैं? दृष्टि. नाम भी आपका दृष्टि, द विजन, ये तो समझते ही होंगे. तो क्या दृष्टि है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की? फंडामेंटल राइट क्या चाहता है? हाँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. डीपीएसपी क्या विजन है, क्या दृष्टि है उसकी? या देखिए, डीपीएसपी में मेंटेनेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. मेंटेनेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे करेंगे ये? बाय एलिमिनेटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. बाय एलिमिनेटिंग socio-economic inequalities. What about the vision in the fundamental right part? Political democracy. How? By protecting people's liberty from the encroachment of the state. हाँ, फंडामेंटल राइट्स में लिखिए, ensuring political democracy by protecting people's liberty from the invasion of the state. इंस्पिरेशन. डीपीएसपी का इंस्पिरेशन क्या है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. और इनका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दैट्स द बेसिक इंस्पिरेशन. स्कोप. व्हाट इज द स्कोप? फंडामेंटल राइट का स्कोप क्या है? स्कोप मतलब व्हाट इज द स्कोप ऑफ इट्स फंक्शन? वेयर डज इट फंक्शन? What is the scope of the function? सबने पढ़ लिया ना फंडामेंटल राइट. हाँ, बताओ फंडामेंटल राइट कहां फंक्शन करता है, कहां अप्लाई करता है? ये नहीं पता? पूरी रामायण पढ़ ली और
हाँ हाँ, where do you apply fundamental right? हाँ, for individual, यही होता है ना. तो scope of fundamental right is what? It is promotion of the rights of the individual. So fundamental right scope is what? It is individual centric. What about DPSP? Is it individual centric? No. Then it is talking about whom? Huh? It is talking about state. It is trying to do what? Create a welfare state. Welfare state कैसे बनेगा? By state policy. What policy? Welfare of the community, welfare of the society. So how do you ensure welfare of the society? DPSP is for that. So that is why फंडामेंटल राइट का कंसर्न इंडिविजुअल है, लेकिन डीपीएसपी का कंसर्न सोसाइटी है, कम्युनिटी है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस इन द स्कोप. सो फंडामेंटल राइट विल ऑपरेट इन द इंडिविजुअल टेरिटरी, while DPSP will operate in the territory of the society, the community, because it is society centric, community centric. DPSP does not talk about individual right as such. DPSP's idea largely talks about the concept of creating a welfare state, and in welfare state your concerns are not individual, your concerns are very social, your concerns are very community centric. So the scope of DPSP and fundamental right is completely different. Fundamental rights larger concern is individual rights, so it is about individual welfare, promoting individual liberty, but DPSP's larger concern is the creation of a welfare state. That's why it's focused on social concerns, it's focused on community's concerns. So the scope is community centric for DPSP, the scope is individual centric for fundamental rights. DPSP में लिखिए, promote welfare of the community and society, promotes the welfare of the community and society. So it is community centric. So it is community centric. Fundamental right में लिखिए, promotes the welfare of individual, promotes the welfare of individual. So it is individual centric. फिर कानून, लेजिस्लेशन, किसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कानून की जरूरत पड़ेगी? डीपीएसपी. DPSPs are basically principles, directions for policy, which means they don't have a legal validity on their own. So if you want to implement the ideas of DPSP, all DPSPs would require a law first. Without a law, you can't implement any DPSP. आई बात समझ में? So if you want to make any instruction that the Constitution gives under Part 4 to the state, then those instructions has to be first created into a law. Without a law, you can't implement any of the ideas which are mentioned under directive principles of state policy. But if you look at fundamental rights, most of them, barring few, because we know that there is a difference between enforceable and non-enforceable, or executory and self-executory and non-self-executory. हमने ये देखा है. But if you see, most fundamental rights can be executed on their own. You don't require any supportive law. There are very few fundamental rights that require a law. This is also a very, very important distinction between DPSP and fundamental right. So in order to implement DPSP, you require a law. But most of the fundamental rights can be implemented even without passing a law, because they are self-executory. इसलिए legislation में ये difference है. Legislation, DPSP, they require legislation. They require legislation for
legislation for their implementation, implementation, full stop. So they are not automatically enforceable. इधर लिखे फंडामेंटल राइट्स में most of the fundamental rights are automatically enforceable. What is the penal measure? कोई सजा है for violation of fundamental rights or DPSP? Which means, can we be punished for violation of fundamental right or DPSP? Do we see that? है ना? तो so if you see the penal measure, आपको पता है कि fundamental rights are non-enforceable. So fundamental rights do not carry any penal measure. But DPSP do not have enforceability, legal enforceability. So if you are just violating DPSP or not paying heed to the directives, you can't be punished for that. Unless and until there is a law which would actually require that you are punished for violation of DPSP. But if you see fundamental rights, they are enforceable. And so there exist laws where you can have remedies, and in some of them you can even be punished. You can be given criminal punishment for violation of certain fundamental rights. Okay, so that's also a basic difference on the issue of how you can punish somebody for violation of DPSP or, for that matter, fundamental rights. Penal measure, DPSP. For violation of DPSP, an individual cannot be punished until a law is framed. फंडामेंटल राइट की तरफ लिखिए. फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, punishment can be awarded to the violator Now we should know about the evolution. कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो सेट ऑफ राइट्स की बात की. इसके बारे में मैं शायद पहले भी जिक्र कर चुका हूं. मैं एक बार फिर से इस पे आई वांट टू जस्ट रेफर दिस अगेन. सी, when we were under the British, we realized how important it is to be a person with civil rights and political rights. Because if there was some expression made by our freedom fighters, they were punished by the British laws. For example, Tilak would be punished because he would write something in his Maratha. He would publish something which would be not liked by the state. Or maybe our freedom fighters might be punished because, they may enter into some sort of political activism, like a demonstration of sorts. So that's why civil right we understood was very important. When we were fighting for India's independence, the constitution makers, who actually were the ones who were also fighting for India's independence, they had realized long time back that civil liberty is crucial. Civil liberty is paramount if you really want to create a free state, if you really want to create a democratic state. So because these civil rights were already trampled upon by the British activities, they had no security of any civil liberty. They could not express themselves freely. They could not write freely. They could not
participate in political affairs freely. They could not do demonstrations against the state freely, like assembly, association, movement. इस तरह के अधिकार नहीं थे हमारे पास. So we knew that if you really want to create a democratic India in future, we will actually ensure that we have civil rights. Then there were political rights, that is voting, standing for election, because you know that during British Raj, roughly 10 to 11% of Indians had voting rights. That too after reform. To begin with, there were hardly 5 to 7% voters who were allowed to vote in the country. So we had a realization during the independence movement itself that as and when India would become a free state, we would ensure that everyone who is a citizen would actually have civil and political liberties. इस freedom में हम कोई भी कोताही नहीं करेंगे, because we knew how important this civil and political liberties were for creating a new state and making the state progress gradually even post independence. Then there were two committees which were crucial for the evolution of TPSP as well. One was the committee like Sapru committee. The other was like B.N. Rao, who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly. So he was in the assembly as an advisor to the Constituent Assembly. And on the recommendations of Sapru and B.N. Rao, we divided the group of rights into two. What was this? हमने क्या किया कि हमने राइट्स को, इनकी जो रिकमेंडेशन आई उसमें हमने कहा कि दो तरह के अधिकार हम संविधान में देंगे अपने भारतीय संविधान में. वन वुड बी सम राइट्स दैट विल बी जस्टिशिएबल, while the other form of right might be non justiciable. हम शायद उसको enforce ना करा पाए किसी कोर्ट से. तो rights will have the two form. ठीक. और फिर उन्होंने क्या किया कि justiciable right is what formed part 3 and non justiciable right is what was formed as part 4 of the Indian Constitution. So it is what? It is based on the recommendation of Sapru committee and Sir B.N. Rao. We divided, so लिखिए, based on the recommendations of Sapru committee and B.N. Rao, not Roy, two categories of rights were framed. Rao, two categories of rights were framed. फिर ये लिख लीजिए, justiciable, non justiciable. Justiciable, non justiciable. Justiciable right was placed in part 3, non justiciable as DPSP part 4. तो ये बन गया हमारे लिए DPSP, ये बन गया fundamental right. Next point. The constitution makers knew that issues like, ठीक है, तो अगर हम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी सबसे बड़ी समस्या है, और आपको लगता है कि पॉवर्टी को आप किसी राइट से खत्म कर देंगे एक दिन में? नहीं. तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम राइट नहीं दे सकते थे उस वक्त, और स्टेट के पास इतना रिसोर्स नहीं था दैट दे कुड फाइट दीज इश्यूज इंस्टेंटली. तो जो इंस्टेंटली फाइट कर सकते थे विदाउट एनी रिसोर्स स्पेंट बाय द स्टेट, जैसे हमें मिला राइट टू इक्वालिटी, उसके लिए सरकार को पैसा खर्च करना है? नहीं करना. तो इसका मतलब है दिस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. Something like poverty, unemployment, this would require time. When the state had enough resource, then they would interfere into that area. That's why those issues which could be addressed overnight, those issues which could not be addressed overnight but gradually,
तो जिसको ओवरनाइट एड्रेस कर सकते थे, तुरंत एड्रेस कर सकते थे, इंस्टेंटली एड्रेस कर सकते थे, वो हमने जस्टिशिएबल पार्ट 3 में रखा, विच वॉज नॉट टू बी एड्रेस्ड इंस्टेंटली, बट वी कुड एक्चुअली एड्रेस इट ग्रेजुअली over a period of time, so that was kept as justiciable in part 4 of the constitution. The constitution makers knew that issues like poverty, employment, lack of education, poverty, unemployment, lack of education could not be addressed overnight, full stop. So those objectives which could be achieved immediately, ब्रैकेट में लिखिए पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, बाहर से आके बड़ी खुश लग रही हो तुम, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, became fundamental rights. Next point, those objectives or problems which could not be achieved immediately, ब्रैकेट में लिखिए सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स became directive principles of state policy. ठीक है, so this is the larger introduction of how the idea evolved in the very first place. How did we see the evolution of the idea of rights divided into two segments, one being made justiciable, the other not being made justiciable, but what did we do? We actually made it more like a policy directive. We made it a policy, we made it a principle, we made it a directive. You know, that's why there are differences. But how did we realize कि कौन से अधिकार को, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हमें पॉलिटिकल, सोशल या पार्ट, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हमें पार्ट 3 में रखना होगा, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पार्ट 4 में रखना होगा? उसके लिए हमने क्या किया? We just realized that those objectives that can be attained immediately, overnight, that should be the concern of the state, immediate concern of the state. So we should make it justiciable so that we'll be able to address it as soon as possible. But those objectives that would require a gradual process by the state, by the activities through which we'll be able to overcome those problems and attain the objectives, that should be kept as DPSP. That is something, a long-term objective of the state. तो वो पॉलिसी में हम करेंगे और पॉलिसी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उन सब चीजों को हम दोबारा से उस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाएं. इस तरह से हमने दो पार्ट में राइट्स को बांटा, इसलिए पार्ट 3 और पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ना. वी हैव सीन हाउ दे आर टू डिफरेंट ideas on the basis of certain criteria. We have seen it. Now the most popular way to understand DPSP is to divide DPSP into 3 heads. यानी DPSP को पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि we have to just write down a classification of DPSP
and divide this classification into 3 primary areas. 3 मुख्य एरियाज में हम डीपीएसपी को बांट देते हैं. Now again, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ नहीं है. Constitution has not written about it. Constitution never say that some provisions of DPSP are socialist ideologies. Constitution never says that some principles of DPSPs are Gandhian ideologies. Constitution never says that some principles of DPSPs are liberal ideologies. It is just an academic exercise where for the convenience of classification we have divided it, which means the academic world has divided it. For convenience of study, the classification of DPSP into 3 parts. Constitution has not done this classification, है ना. जैसे हमने एक और classification मान लो किया कि we talked about classification of fundamental right, but fundamental right का classification हमें समझ में आता है because Constitution has that classification where they have talked about equality, we have talked about freedom and these parts, है ना. But DPSP में this classification is our own making. We are going to classify it into 3 different heads. Otherwise, in the Constitution, they have just written articles from 36 to 51 of the Constitution that deals with Part 4, and Part 4 can be classified into 3 heads: socialist, Gandhian, liberal. Okay, so we'll also try to understand, and this is the most popular classification of DPSP. So we'll also classify DPSP into those 3 heads. तो क्लासिफिकेशन कैसे करना है, हमें 3 हेड्स में करना है. So one is that there are some principles of DPSP which are socialist principle. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन DPSP के प्रिंसिपल्स का, तो वी से सोशलिस्ट प्रिंसिपल. कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, प्रोविजन हैं DPSP में which are socialist principles, socialist directives. कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं which are Gandhian principles, which is based on Gandhian principles. यानी गांधी had an ideology, political ideology. So which are the provisions that matches with Gandhian ideology? We have to write that as well. And finally, this is understood as liberal principle. तो ये ideological है. That some provisions are very liberal principles, liberal directives that we read in the directive principles of state policy. Okay, so what we are seeing here is that जो socialist principle है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो सभी provision को पढ़ते हैं which laid down the path for the evolution of a social welfare democratic state in India. तो ऐसे प्रोविजन से जिससे हमारा भारतीय राज्य एक वेलफेयर स्टेट में ट्रांसफॉर्म होगा, हम उस प्रोविजंस को मानते हैं कि दैट दिस इज द प्रोविजन विच इज अंडरस्टूड एज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, है ना. विच मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इंस्ट्रक्शंस विच वुड क्रिएट अ फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट स्टेट विच इज टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस and set the path towards a welfare state. है ना. तो यानी कौन से प्रोविजन, सोशलिस्ट प्रोविजन. What does it do? It sets the path towards a welfare state. ठीक है. यानी इसमें ज्यादातर जो आर्टिकल्स और प्रोविजंस हैं उसने कोशिश की है फॉर व्हाट, to move us towards a welfare state. How? By providing social and economic justice. तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इन्होंने अपना फोकस बनाया है. ऑल दीज प्रोविजंस दैट वी आर गोइंग टू क्लासिफाई अंडर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल. तो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं विच इज ट्राइंग टू फोकस अपॉन ensuring attaining socio-economic justice in India and thereby creating a welfare state in India. Okay, so one of the most prominent or one of the most fundamental article in that section is Article 38 of the Constitution. यानी इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल हम देखेंगे 38, this is typically a
socialist principle based article. Article 38. To promote welfare of the people, by securing a social order, to promote welfare of the people by a social order, based on क्या लिखते हैं ये, जस्टिस. और जस्टिस अब देखो कैसा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. ये कहीं और भी मिला था आपको प्रियम्बल में. हाँ, बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉमा, मिनिमाइज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी. किस चीज में हमें कम करना है इनइक्वालिटी? इन इनकम, इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. So unlike the part 3 article, which needs so much of explanation and understanding, part 4 articles, because they are like directions, so they are very easy. They are just commonly written articles, provisions which are easy to comprehend. So what is this article telling us? This is a typical article which tries to establish socio-economic justice in India, which wants to create a welfare state in India. So what does it say? It basically says that we have to ensure that we have to create such a social order in India which is permeated by 3 ideas. That is justice, which is social justice, political justice and economic justice. So you understand the 3 concepts, because we have read these 3 ideas over there in preamble also. Plus what it says, कैसे बनाएंगे, how do we secure justice at all 3 levels. तो अगर आपको समाज को सामाजिक रूप से जस्ट बनाना है, इकोनॉमिक रूप से जस्ट बनाना है, तो आपको इनइक्वालिटी हटाना पड़ेगा. इनइक्वालिटी कहां से आ रहा है? आर्थिक स्तर पर आ रहा है, क्योंकि सबके इनकम अलग है. तो इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है. वी हैव टू एड्रेस दैट. व्हाट एल्स वी नीड टू डू? वी हैव टू इंट्रोड्यूस सच कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, क्योंकि इनकम से स्टेटस में फर्क पड़ेगा. कास्ट से, सामाजिक कास्ट से जो सोशल जस्टिस है, जब समाज को हम सोशल जस्टिस की तरफ ले जाएंगे तो उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी. बिकॉज what needs to be done is we have to remove this inequality which exists in this society. तो इसलिए social justice will try to create, lessen the inequalities that exist at the societal level. तो इसलिए status की जो inequality है उसको भी हमें कम करना है. wealth की जो inequality है, income की जो inequality है उसको कम करना है, और opportunities की जो inequality है उसको भी कम करना है. You know that what does opportunity mean? So we actually see that these are typically facilities की जो inequality है उसको भी कम करना है. कौन करेगा? It is an instruction to the state. राज्य को करना है इसे. So if the state is able to create a state, a society where it is able to reduce inequality on the basis of income, reduce inequality on the basis of status, reduce inequality on the basis of facilities, then what we are talking about is we are moving towards a welfare state where the state is taking the responsibility. इसलिए पॉजिटिव है ये कि स्टेट ये सब करेगा. स्टेट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट I will make such policies so that I may be able to reduce the inequalities on the basis of income, status, facilities, opportunities which might exist in our society. So Article 38 is typically that resolved by the Indian Constitution so that the Indian state would implement such policies which will move us towards the idea of a welfare state, attaining justice at all 3 levels of social, political and economic. ठीक है? Now write Article 39.
Article 39. This is another major article that deals with the issue of social justice, that deals with the issue of welfare state. Article 39 और 39 में काफी आर्टिकल्स हैं. 39 पहले 39A स्मॉल ए 39A राइट टू. अच्छा, ये लैंग्वेज नहीं है कि इट इज लाइक राइट, ऐसा नहीं है, बट हम उसको राइट के तौर पर पढ़ा रहे हैं. मतलब हम समझ रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये क्या कह रहा है. इट बेसिकली सेइंग एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, है ना. सो इट्स मोर लाइक यू कैन से दैट इट इज राइट. जैसा लगता है कि हर व्यक्ति को जिससे वो अपना जीवन जी सके, गुजर बसर कर सके, उसको एडिक्वेट सफिशिएंट मींस मिलना चाहिए. किस चीज के लिए? जीविका जीने के लिए. सो इसका मतलब है यू शुड गेट एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड. तो जीविका जीने के लिए आपको पर्याप्त संसाधन, काम मिलना चाहिए. तो क्या हम ये दे सकते हैं? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जब हम आजाद हुए अभी भी नहीं दे सकते. उस वक्त तो बिल्कुल भी हमारी स्थिति नहीं थी. तो इसलिए ये सब क्या है? दीज आर लाइक इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट दैट वी हैव टू प्रोवाइड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन्स, है ना. एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू सिक्योर एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, यानी एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स. 39A और याद करो 39B और 39C, यानी ये सब 39 आर्टिकल का ही पार्ट है. दूसरा 39B. व्हाट वाज 39B? 39B इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, इक्विटेबल distribution of material resources of the community for common good, which means you have to ensure that the resources are distributed to serve the common good. ये लिखा हुआ था मैंने जब बताया था 39B. दूसरा 39C. what was 39C? Prevention of concentration of wealth in few hands. Distribution is about B, जो अभी पढ़ा. हाँ, 39C. 39C ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. तो किसी भी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? मींस ऑफ प्रोडक्शन, वेल्थ, ये किसके हाथों में होता है? कम लोगों के हाथ में होता है ना, कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में होता है. तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहेगा कि आपको क्या करना है? यू हैव टू इंश्योर दैट दिस वेल्थ डज नॉट कॉन्सेंट्रेट इन फ्यू हैंड्स ओनली. तो यू हैव टू मेक सच मैकेनिज्म. तो सोशलिस्ट स्टेट में इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथों में होता है? स्टेट के हाथ में होता है. स्टेट, इसलिए नेशनलाइजेशन प्रोग्राम स्टेट करती है. अधिकतर मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी अधिकतर जो इंडस्ट्री है, कामकाज जिससे होता हो, उसकी जो जिससे कोई चीज उत्पादन होती हो, किससे होता है? इंडस्ट्री से होता है. तो सोशलिस्ट स्टेट का एक फीचर आपको दिखेगा दैट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, व्हिच मींस दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, nationalization of resources. So if you look at Indira Gandhi's tenure, that is like a very, very prominent nationalization drive that she was pushing for. Nationalization of banks, nationalization of airports, airlines. So, this is what is a socialist policy. So what we get in the constitution in Article 39C is also the same idea, the same instruction, that the state has to ensure that they prevent the concentration of wealth in few hands, concentration of means of production in few hands, so that what might happen, you can actually remove inequality, because if wealth is in few hands, then few people will be wealthy at the cost of others. But if state is having control over these resources and wealth, then it can ensure a better distribution through 39B, so that it can lead to a more egalitarian social order, more equitable social order. So equitable distribution of the resources of the community to serve the कॉमन गुड. तो इसीलिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए आर्टिकल है, और 39 इज लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच
socialist provisions that will move us towards a welfare state. 39C. 39D, ये बहुत बड़ा संकट था देश में. संकट क्या है? और संकट ये है कि मैन एंड वुमेन दे आर नॉट पेड इक्वली, है ना. आप देखिए किसी भी जगह पर जहां पर मजदूरी कर रहे हो पुरुष और महिला, मजदूर क्या है, अपना एक बीड़ी का पैकेट लेके आएगा, 10-20 बीड़ी पीता रहेगा, हर 10 आधे घंटे पे उसको ब्रेक चाहिए. और महिला जो है वो एकदम काम करती रहेगी, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेगी. और मजदूर हल्के हल्के काम करेगा. और पैसा कौन ज्यादा लेगा? पुरुष मजदूर, नॉट दी फीमेल. वाई? बिकॉज सोसाइटी में एक कंसर्न है कि फीमेल आर वीकर सेक्स, मेल आर लाइक मोर स्ट्रॉन्गर, दे हैव मोर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ. तो मजदूरी में किसको ज्यादा पैसा मिलेगा? मेल को. लेकिन अगर दोनों समान काम कर रहे हैं तो वेतन समान होना चाहिए. ठीक. तो इसलिए आप अगर देखें तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट प्रिंसिपल विच इज बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट इक्वालिटी एज फार एज इनकम इज कंसर्न. तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पर एक जैसे काम के लिए भी यू कुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो व्हाट यू हैव टू डू, देयर हैज टू बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. अगर समान काम है तो फिर समान वेतन मिलना चाहिए. तो ये इंस्ट्रक्शन है, राइट नहीं है, लेकिन सरकार इसके लिए कानून बना सकती है इक्वल रिम्यूनरेशन के लिए. सो दैट इफ यू सी एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आर दे गिविंग अनइक्वल पे टू द वुमेन? ऐसा होता है कि मतलब वुमेन आईएएस ऑफिसर बनती है तो उनको कहता है कि नहीं ठीक है, आप तो महिला हैं तो थोड़ा कम ही पैसा में काम कर दीजिए, देश गरीब है, सरकार आपकी ऋणी रहेगी, देश है ना आपका कर्जदार रहेगा कि आपने कम पैसे में अपनी सेवा दी. दैट्स नॉट द केस, है ना. पुरुष महिला समान काम समान वेतन, है ना. आर्मी में महिलाएं हैं, आजकल एयरफोर्स में है ना. और वहां पर आप देखेंगे कि उनकी ट्रेनिंग है, डेफिनेटली उसकी थोड़ी अलग होगी पुरुषों से, क्योंकि उनकी फिजिकल कैपेसिटी थोड़ी अलग होगी पुरुषों से. बट ऐसा थोड़ी होता है कि आर्मी ये कहता है कि नहीं नहीं, आप देखिए कि क्योंकि आप डिप्स कम मार पाते हैं पुरुषों के बनिस्बत तो इसलिए आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, या आप कम दौड़ पाते हैं पुरुषों के बनिस्बत तो आपको थोड़ा कम पैसा देंगे. यू कांट डू दैट. अभी तक क्रिकेट में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम में पुरुष महिला के बीच में काफी अंतर था पे पैरिटी यानी प्राइज मनी के कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन कम से कम अब इवन इन स्पोर्ट्स यू वुड सी दैट दे हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस इक्वल पे पैरिटी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. टेनिस में अगर आप देखें तो सबसे पहली बार ये काम किया था विंबलडन ने, you know, so that shows the sign of progress. So British society, English society, more progressive in terms of gender parity, and it was the first trophy, first grand slam to introduce equal parity for men and women. The prize money, Wimbledon was the first tennis tournament where the prize money for the winner in male category or female category that was equal. तो सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स सब में बराबर पैसा पुरुष महिला को. मिक्स डबल्स में तो चलो दोनों होते हैं तो कोई बात ही नहीं है, बट सिंगल्स और डबल्स में जो पुरुष महिला का टूर्नामेंट होगा उसमें प्राइज मनी वाज इक्वेटेड. तो ये एक रिजॉल्व है ओवर द इयर्स दैट वी हैव टू इंश्योर इक्वालिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. और ये इंस्ट्रक्शन कहां मिलता है हमें? 39D में. 39D टू पे यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर men and women. Men and women. 39E, इसमें वर्कर्स और चिल्ड्रन के हेल्थ को लेकर बात कही गई है, क्योंकि वर्कर्स और वर्कर्स के अब्यूज की चिंता की गई है. तो वी से दैट दिस इज ऑल्सो अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट आर्टिकल. Because in socialism, there is more focus on workers, conditions of workers, welfare of the workers. That's why. 39E, preservation of health and strength of workers and children against forcible, that is by force, forcible abuse.
है ना, तो बच्चे और वर्कर्स, इनको प्रिवेंट करना है, उनके हेल्थ को और उनके स्ट्रेंथ को, सो दैट दे आर नॉट फोर्सिबली कौन अब्यूज करेगा? इट कुड बी आइदर अ कंपनी, a factory, a worker or someone. So they cannot forcibly abuse the strength of worker, the strength of the children, okay, as well as health of the worker and health of the children. So they can't actually get them to work into conditions where their health might deteriorate. You can't abuse a person's health. You can't abuse a person's strength. You have to respect that. That comes from Article 39 Clause E. 39 Clause F. सब स्मॉल में लिखना है, क्योंकि फिर 39A हमें लिखना है, विच इज कैपिटल. ये बाद में जोड़ा गया था. 39F. Opportunities for healthy development of the children. Opportunities for the healthy development of the children. Okay, so basically what you are doing is you are exploring these ideas, which gives us more or less a concept of how to see certain policies which the state has to follow in this differential part, which we read as as 31, 39A, B, C, D, E and F. अब जो F है वो बहुत लंबा सा आर्टिकल है. मैंने अभी क्या लिखवाया? That you are actually providing opportunities for the child to grow, to develop, to blossom. Why? Because what is here is, जो लिखा हुआ इसमें जो मैसेज है वो ये है कि you can't exploit the childhood of a children. The childhood or the youth that is protected against any kind of exploitation, any kind of moral and material abandonment. तो स्टेट को क्या इंश्योर करना है कि you have to give enough opportunities for the children to develop themselves. Because ultimately, who are these children? They are going to be your future as far as the state is concerned. So I think what is basically being projected here is that you are basically reading an article which is trying to provide you ample scope to see that what are the major instructions to the state, so that if the state acts on those instructions, that would primarily lead to the evolution of a socio-economic order, and it will lead to the emergence of a welfare state based on certain very, very strong, staunch socialist principles. So that's why Article 38, 39 happens to be one of the most significant provision of the Constitution, which deals with such strong socialist ideas, orientations, ideologies. फिर हमारे पास है 39 capital A. So if you see 39 capital A, जैसे ही आपको कहीं कैपिटल A दिखता हो तो आपको क्या समझना है? That we are talking about the article, but this article was not there in the original Constitution. It has been inserted by way of amendment to the Indian Constitution. That's what 39 capital A would mean. तो जहां जहां कैपिटल आएगा ना किसी भी आर्टिकल में, that would be by way of amendment. और this actually is a very, very significant amendment, because we always have a problem in terms of people who are considered to be poor, जो हम कह रहे थे एक्सपेंसिव है बहुत लीगल रेमेडी. और अगर लीगल रेमेडी एक्सपेंसिव है तो फिर क्या गरीब को हक नहीं है कि उसको भी लीगल रेमेडी मिले? मुझे तो यह अधिकार है, दैट आई हैव अ राइट टू कंसल्ट माय लीगल प्रैक्टिशनर एज सुन एज आई एम अरेस्टेड. ये सिक्योरिटी है ना. आर्टिकल 22 पढ़ रहे थे तो उसमें था अरेस्ट के बाद as soon as possible the state will tell me, executive will tell me about the grounds of my arrest. I'll be given the opportunity, earliest opportunity to consult a legal practitioner. Suppose I don't know any, then I'll be given the opportunity to consult my family members or my friend or anyone who I think may know a legal practitioner, so that I can have a legal practitioner's help.
so that I can fight my case, I can argue my case before the court. You know, in India there are so many people, because of poverty, extreme poverty, they are not able to hire a legal practitioner, and because of that there are so many people who are under trial victims in the country who have been in the jail for more time than they would actually be given punishment for if they are given a verdict by the court. मतलब ये हुआ कि ये लोग अंडर ट्रायल्स हैं. अंडर ट्रायल का मतलब है इनकी ट्रायल अभी खत्म नहीं हुई है, और जब तक ट्रायल खत्म नहीं होती है तब तक क्या है, आपको जजमेंट में वर्डिक्ट नहीं मिलता. वर्डिक्ट का मतलब आपको सजा नहीं मिलती. अब किसी ने मान लो पॉकेट मारी की है, उसकी सजा है मान लो 4 महीने या 6 महीने जेल. हाँ, अच्छा काम नहीं है डेफिनेटली, बट मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी ने पॉकेट मारी की, उसकी सजा है 4 से 6 महीने का जेल. सपोज वो व्यक्ति 6 साल से जेल में है क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा है. ही डज नॉट हैव अ लीगल प्रैक्टिशनर, ही कुड अवेल द हेल्प ऑफ, एंड देयरफॉर नोबडी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हिज केस. तो उसकी ट्रायल खत्म ही नहीं हो रही. अगर उसको कल सजा भी होती है तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, सजा देते उसको छोड़ दिया जाएगा. कहा जाएगा कि मतलब आपको सैल्यूट है कि 6 महीने आपको रहना था लेकिन आप 6 साल से हैं, है ना. हुकूमत हिंदुस्तान आपसे इसके लिए माफी मांगता है. ऐसा बोलेगी नहीं कोर्ट, बट कोर्ट भी काफी अप्रिशिएट करेगी कि भाई आपके जैसे लोग अगर हो तो मतलब जस्टिस सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से चलेगा. लेकिन ये इशू क्या है, ये इशू बहुत गंभीर है, बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर ट्रायल्स who might have been living for more than what they would be convicted for. ये जस्टिस तो नहीं है, उसको न्याय तो नहीं मिला. तो इसलिए जब 39A लाया गया तो ये इंश्योर किया गया कि ऐसे लोगों के लिए सरकार उनको फ्री लीगल एड देगी. सरकार अपने तरफ से उनके लिए एक सरकारी वकील हायर करेगी जो उनके लिए केस लड़ेगा, रिप्रेजेंट करेगा उनको कोर्ट ऑफ लॉ में. इसलिए 39A is an excellent example of the state trying to provide free legal aid to the poor who can't hire a lawyer. Then they would not go unrepresented. The state has to ensure that they are provided a lawyer. कहाँ लिखा हुआ है? इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है. तो इसलिए इसको इंप्लीमेंट करना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा. और सरकार ने बाद में नालसा जो एक्ट है उसके तहत इसका कानून बनाया है, so that people can get free legal aid. ठीक है, that is free legal aid might be available to the people. 39A, to promote equal justice to promote equal justice and provide free legal aid to the poor and ensure that justice is not denied, and ensure that justice is not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. तो अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे कि उसको लीगल रेमेडी मिल सके, तो that justice should not be denied to the person. The state will ensure that the person is getting assistance as far as justice is concerned. Who will assist it? The state will ensure that the person receives legal assistance in order to fight his or her case. That is what we see as another major step taken by the DPSP, which is creating a welfare state and trying to ensure through its instruction that the state tries to achieve certain socio-economic objectives through principles of socialism. Okay? Then Article 41. Article 41. Last. मतलब आज के लिए लास्ट, नॉट द लास्ट वन. अभी तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल ही हुआ है, गांधी जी हैं, फिर उसके बाद लिबरल आइडियोलॉजी भी है ना. तो गांधी जी बताएंगे कि कैसे
हमको प्रोहिबिशन की तरफ बढ़ना है ना, यानी शराब और इस तरह की जो चीजें हैं जिससे कि लोगों को नशा होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको कैसे स्टेट को प्रोहिबिट करना है। तो स्टेट को ये इंस्ट्रक्शन है, और कुछ स्टेट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है ना, जैसे उनका खुद का स्टेट गुजरात, तो गुजरात में सीरियसली लिया विथ एक्सेप्शन, है ना, होटल्स वगैरह में अवेलेबल है, सर्व करते हैं। लेकिन कुछ स्टेट हैं जिन्होंने एकदम कहा कि बिल्कुल सीरियसली पोजेशन ऑफ अल्कोहल इज अ पनिशेबल ऑफेंस, नॉट ड्रिंकिंग, ओनली पोजेशन। ड्रिंकिंग की तो अलग बात है, ओनली इफ यू आर पोजेसिंग। कोई टेस्ट नहीं है कि आपने पिया या नहीं पिया, पीना तो बहुत दूर की बात है, आपने पोजेस भी किया तो पनिशेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल, पहले जेल जाओ, 15-20 दिन जेल में रहो, फिर बेल के लिए अप्लाई करो। एंड इफ यू लुक एट द रफ एस्टिमेट, कितने सारे लोग हैं इसमें, सो it's more than lakh people who might be facing charges under the law. Almost we have crossed 1 lakh people who are facing charges of possessing or consuming alcohol. कुछ लोग तो कंज्यूम करके बैठे ही रहते हैं पुलिस के इंतजार में, है ना, कि आइए हमको पकड़ के ले जाइए, और कुछ लोग पोजेशन में। ठीक है, कल करते हैं हम लोग इसके आगे।